Assalamu alaikum everyone. I'm your host, Aiman Ateek. And for our first episode of the podcast, we're in conversation with the CEO of Universal Service Fund, Mr. Haaris Mahmood Chaudhary. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. If you could just tell our viewers a little bit about the Universal Service Fund. The Universal Service Fund is a fund which is created by the government of Pakistan to bridge the digital divide. So simple words में ये है कि जितने भी रूरल और रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनके लिए कमर्शियल केस नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे इनकम लोगों की इतनी नहीं है कि वो इंटरनेट अच्छे तरीके से मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर सकें और पे कर सकें. सो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन करती है थ्रू यूनिवर्सल सर्विस फंड. मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है और हम एक सब्सिडी प्रोग्राम के तहत उन एरियाज़ में इन ऑपरेटर्स के मिल के एक सब्सिडी दी जाती है उस एरिया में ताकि वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए. What do you see are the core challenges that are confronting or that the Pakistan's current technological landscape is facing? Challenges में again, sparsely populated, economic conditions are not very favorable. एक macro level पे भी और micro level पे. Micro level पे I mean कि हम लोग हमारी poverty काफ़ी ज़्यादा है. तो obviously उन एरियाज़ में कनेक्टिविटी करने के लिए यू हैव टू पे ऑल्सो, यू हैव टू बाय अ स्मार्टफोन. अब स्मार्टफोन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से कनेक्टिविटी को या उसका जो डिजिटल डिवाइड को मीट भी नहीं कर सकते. और स्मार्टफोन्स आर एक्सपेंसिव. हमारे टैक्सेस ऑन स्मार्टफोन्स आर ऑन हायर साइड्स. सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैक हॉल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है दैट्स ऑल्सो वेरी कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. वो भी रूरल रिमोट एरियाज़ में उस तरह नहीं प्रोवाइड हुआ जो होना चाहिए. एक चैलेंज है. यूनिवर्सल सर्विस फंड हम लोग सब ऑपरेटर्स के साथ विद द गवर्नमेंट वी ट्राइंग आवर बेस्ट बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. A bit of perspective on the situation and how important it actually is to bridge this digital divide that the country currently has. Could you give us an idea of in terms of what percentage of Pakistanis, what proportion of Pakistanis currently actually have access to the internet? Currently अगर मैं आपको recent stats बताऊँ तो तकरीबन I would say over 110 million जो कि हमारी roughly half of the population बनती है के पास access है 3G 4G का मोबाइल पे, which is a good number. But still वो लेकिन ज़्यादातर concentrated on urban और semi urban में और बहुत कम rural areas में है. लेकिन जिसमें जो missing link है जो ecosystem में पूरे में वो है penetration of smartphones. और हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सके जिस तरह हमें बढ़ाना चाहिए. ये स्मार्टफोन जब ये आना शुरू हो जाएंगे ईज़िली एक्सेसिबल होंगे इन द रूरल कम्युनिटीज़ स्पेशली उन लोगों के पास जिनकी इनकम उस तरह नहीं है तो ऑफ कोर्स उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होंगे. लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है दे हैव रियली टेकन एडवांटेज ऑफ इट एज़ वेल. एंड आपने देखा होगा बहुत सारी ई कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग. और कोविड ने इस चीज़ को थोड़ा सा हमें भी थका दिया. आई वुड से एक्सपेडाइट करवाई चीज़ें और जो चीज़ें आज से 5 साल बाद होनी चाहिए थी उसने हमें पुश किया कि हम उसको जल्दी कर सकें एट द गवर्नमेंट लेवल एंड इवन एट द प्राइवेट सेक्टर लेवल. Diversity and inclusivity. We see that this is also one of the things that you have stated as your organizational core values. How important is it and what is the organization doing to ensure this diversity inclusivity? This could be in terms of gender, in terms of age, maybe even different ethnicities. Environment ऐसी हो कि मेरी अपनी बेटी या मेरी वाइफ या मेरी बहन अगर वहाँ पे काम कंफर्टेबल कर सके तो बाकी लोग भी कर सकें. So now by the grace of Allah in the last 2 years we have intentionally also and also on the merit हम लोगों ने अब उसको तकरीबन 15% पे लिया है. And my target is that by end of next year, I have a lot of support from my government on this, from even my minister. We take it to 20%. Okay. And we're confident we'll be able to do that. And it has definitely helped us in our decision making, in our way of operating, in way of achieving our goals, in our success. They're playing a very important role. दूसरी जो आपने ethnicity की बात की, that's also very important. अब हम लोग जिस तरह रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में काम कर रहे होते हैं उन एरियाज़ में सो वी ऑल्सो ट्राई आवर बेस्ट कि हम उन लोगों को इन्वॉल्व करें बिकॉज पीपल हु लिविंग दे
जो पेन वो फील कर सकते हैं शायद मैं इस्लामाबाद में रह के फील नहीं कर सकता. So we have people from Balochistan, Kashmir, uh, interior Sindh, southern Punjab. So all those areas, so they are part of our. We have seen that the Universal Service Fund, they are a strong advocate for engaging women and girls in the ICT sector. Can you tell us a little bit about that journey? What has that been like, especially in a country like Pakistan? हम लोगों ने एक पाकिस्तान बैतुल माल के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें जितने भी उनके वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है क्रॉस पाकिस्तान, which I roughly believe was 120 at that time, जिनको उन सब एम्पावरमेंट सेंटर्स में हम लोगों ने उनको कंप्यूटर लैब्स इस्टेब्लिश करके दिए और उनको कहा कि प्लीज़ आप इन बच्चियों को जो है साथ थोड़ा बहुत कंप्यूटर की भी नॉलेज देना शुरू करें. Just to give them an exposure and they feel and they start using it, they say, and they can imagine what the world could be. Um, so that was a great experience, and we trained over 30,000 students in over a period of 3 years, and we saw the energy levels, and we saw the the spark in the little girls, by using the computer and seeing, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं. And we also came across very good example that a lot of people have थोड़ा बहुत जो अपना इस इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स का काम भी किया. आई वुड नॉट से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर किया. So that obviously that has improved their livelihood and has also improved the income power of the whole house. Um, इसी तरह का हमने एक दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट किया था ICT फॉर गर्ल्स. इस्लामाबाद के जितनी भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, रफली 226 स्कूल्स हैं, उन सब में भी कंप्यूटर लैब्स में हैं, लेकिन उसमें हमने 2-3 चीज़ें जो हमने पुराने एक्सपीरियंस से हमने लर्न की थी. व्हाट वी डिड इज़ दैट कि हमने उसमें कंटेंट भी बनाया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके, और हमने बच्चियां जो इवन 6 साल की भी हैं, स्टार्टेड ग्रेड 1, उनको भी कंप्यूटर का एक्सपोजर दिया जाए. उस प्रोग्राम में हमारा जो मिसिंग लिंक था वो ये था कि वी डिड नॉट हैव द ट्रेन टीचर्स. इसमें हम लोगों ने ट्रेन टीचर्स हायर की और इस पूरे सिस्टम में बनाया. So, and it was a wonderful experience. And I tell you, because I was very passionately involved in that program, in rolling out, कि हम लोगों ने 202 टीचर्स हायर की मेरिट पे, एंड उसका टेस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आइदर फास्ट या नस्ट ने लिया था मेरिट पे. एंड उसके बाद हम लोगों ने उनको इंटरव्यूज़ किया और हमने उनको प्लेस किया. उन्होंने जैसे ही इन गवर्नमेंट स्कूल इस्लामाबाद के जो फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नीचे आते हैं, when they started teaching these kids, these girls, कंप्यूटर की 4Cs का हमने कंटेंट बनाया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके, उन्होंने ओवरऑल स्कूल की इन्वायरमेंट ही चेंज कर दी थी, बिकॉज दे वर यंग टीचर्स एंड दे स्टार्ट टीचिंग. सो जितना एक 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 एनर्जी लेवल पूरे स्कूल में, कॉलेज में एक बहुत अच्छा बिल्ड हो गया था. उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स मिली कि उन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यूज़ किया और उसने उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स. फिर हमने वी डिडंट स्टॉप देयर, सो देन वी इवन आस्क्ड यूनाइटेड नेशन कि आप इन टीचर्स को ट्रेन द टीचर्स प्रोग्राम में डालें और उनको फर्दर ट्रेन करें, बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होती है, सो वी नीड टू कीप ऑन ट्रेनिंग स्किल सेट एंड एवरीथिंग. Then Facebook contacted us and they said, "Okay, we want to launch a program, She Means Business in Pakistan for the first time, जिसमें इन जो ट्रेनर्स के प्रोग्राम में हम इनको और सिखाना चाहते हैं कि फेसबुक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने अपने फॉर एग्जांपल टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस स्मॉल और बिजनेस को ग्रो करने के लिए." एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउडली टॉक अबाउट इट कि हमें इतनी एग्जांपल्स मिली कि चित्राल से लोगों ने फेसबुक के थ्रू चीज़ें बेचना शुरू की. पंजगुर जैसे एरिया, चागी जैसे एरिया, सखर, मीरपुर ख़ास. और एक एग्जांपल विच आई यूजुअली कोट कि सखर में एक बच्ची ने जब वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड हुआ, तो व्हाट शी डिड इज़ कि उसने एक इंस्टाग्राम के एक अकाउंट बनाया एंड शी यूज्ड टू गो टू कराची और वहाँ से लोकल कपड़े लेकर आती थी और उस इंस्टाग्राम के अकाउंट से वो सखर में विद इन अपनी कम्युनिटी वो शी स्टार्टेड सेलिंग एंड शी स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. सो इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैज़ रियली हेल्प्ड चीज़ों में. थोड़ा सा हमारे यहाँ कल्चरली नॉर्म वैल्यूज़ में इस चीज़ को बहुत इंकरेज नहीं किया जाता, स्पेशली कुछ एरियाज़ में. बट आहिस्ता आहिस्ता वी आर गेटिंग देयर नाउ, पीपल आर गेटिंग यूज टू इट कि ये इम्पॉर्टेंट है. और वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, दैट नॉट ओनली
help them to think positively, and but also helps in growing their family in a much more positive manner, and it also add values to their family in terms of uh, उनकी अपनी इनकम में भी एक एडिशन होती है, तो स्ट्रेस प्रेशर्स और बहुत सारी चीज़ें भी रिलीफ होती हैं। और हमारे यहाँ कल्चर इतना नहीं है कि husband and wife या father and daughter work together and look after the house, which we have to encourage, we should promote, because एक बंदे की इनकम से 5-6 लोगों के लिए फुलफिल करना क्वालिटी इज डिफिकल्ट। Climate change. It's something that we read a lot about, especially nowadays, whether it's newspapers, whether it's on TV, social media. लेकिन मैं अपनी अगर personally बात करूँ, it was one of those things that I obviously, as an educated individual, as a privileged and educated individual, alhamdulillah, मुझे पता था कि है क्या, but it was always one of those things कि वो बात की बात है, जब आएगी तो देखेंगे. But now it has come. And the most recent result of that were the floods that happened in Pakistan, and that devastated the entire country. And how did USF respond to that, and just how did it take that on, and what would it do to sort of curb it or perhaps deal with other such crises in the future as well? Currently हमारी को 90% of the sites जो कि यूनिवर्सल सर्विस फंड की सब्सिडी से कॉन्ट्रैक्ट की गई ऑपरेटर्स को, वो सब सोलर पे हैं। इस फ्लड्स ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की, तो बहुत ज़्यादा टावर्स भी डिस्ट्रक्ट हुए, बट यूनिवर्सल सर्विस फंड ने विद ऑपरेटर्स, PTA, मिनिस्ट्री ऑफ IT, सब ने मिल के वी ट्राइड कि हम बहुत जल्दी हमने टावर्स रिस्टोर किए ताकि कनेक्टिविटी इज़ बैक ऑन द ट्रैक, स्पेशली इन द बलोचिस्तान एंड इंटीरियर सिंध एरियाज़ में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका था, क्योंकि कनेक्टिविटी होती तो आपको पता चलता कि डैमेज कितना है, कहाँ पे क्या है. So it was treated like a more than an essential service कि immediately इसको restore किया जाए, और की भी. How would you describe your workplace culture to them? I remember right before the interview, Sir Salman was talking about how he visited your office yesterday and how it was very unique, and you could not tell that it was a public sector workplace. So how, other than that, what are the other different things that you would use to also describe it to the youth and to the young people, and also perhaps to maybe engage them and to encourage them to come towards this side? When I took over as a CEO Universal Service Fund, so public sector organization image is not very attractive to a lot of people, and I want to change that. And I had an advantage because I worked over 10 years in a private sector, in a multinationals, and I also worked in the public sector. So what I did is I want to take the best of both worlds and try to use it in the Universal Service Fund. Public sector के भी और private sector के भी advantages हैं, कुछ disadvantages भी होते हैं. So the culture what I want to build is that it should be the best or the amalgamation of the public and private sector. Or I want USF to be leading public sector organization. So the image of any public sector organization goes away by looking at USF. और जो लोगों के बारे एक very different impression है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करते, या उनकी डिलीवरी इज़ नॉट द पेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. But I can tell you that we at Universal Service Fund not only competes with the private sector, but sometimes exceeds with them as well. So I think the best of both worlds has really helped me, and my experience has also helped me to build that culture. What is a message or lasting message that you would like to leave with the students or the younger audience looking at this interview? Doesn't necessarily have to be related to the organization at all, just generally a message that you'd like to pass on. Students should take control of their lives, because you're the one who will drive this country out of the turmoils. And instead of looking for a job, create jobs. Try to focus becoming more entrepreneurs and give jobs rather than looking for jobs. That's my message to all the students, and I wish them all the best. Thank you so much for gracing our studio with your presence today, sir. It was truly an enlightening experience. Thank you very much. Thank you for inviting me.